This is Sukriti Verma. Welcome to News World. Top news updates. The US President elect Joe Biden will launch an agency review teams this coming week. It's a group of transition staffers that have access to key agencies in the current administration to smooth the transfer of power. The teams will collect and review information such as budgetary and staffing decisions, pending regulations, and other work in progress from the current staff at the federal departments. Hello, my fellow Americans, and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator, and she has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not,
your family, you become an honorary Biden, there's no way out. To all those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And to all those who supported us, I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially those moments, and especially those moments when this campaign was at its lowest ebb. The African-American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another. It's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, and many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word: possibilities. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're a good people. This is the United States of America, and there's never been anything we've been not able to do when we've done it together. Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace to 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. And it goes like this: and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do. With full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice, let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed,
the United States of America, ladies and gentlemen, there's never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as my grandpapa, our grandpapa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you. Raigad police shifted Arnab Goswami, editor-in-chief of Republic TV, to Taloja jail in Navi Mumbai on Sunday morning for allegedly using a mobile phone while in judicial custody inside a makeshift quarantine center for prisoners located in a municipal school in Alibag. Goswami is one of the three accused in the abetment to suicide case of an interior designer and his mother. They have beaten me, they have assaulted me, and they did not let me meet my family. They did not let me meet my mother-in-law and father-in-law. They beat up my son. मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए. इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में. मैं चाहता हूँ इस पर भारत की न्याय व्यवस्था सब लोग Father, they have beaten me, they have assaulted me, and they did not let me meet my family. They did not let me meet my mother-in-law and father-in-law. They beat up my son. मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए. इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में. मैं चाहता हूँ इस पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ. पुलिस प्रोफेशनल है, उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है. मैं पहले महाराष्ट्र पुलिस से कि रियली उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज ये दिन मैंने बहुत पेशेंस रखा है, श्रद्धा और सबूरी. आज इतने दिन के बाद ये दिन मेरे जीवन में आया. मैं उनकी रियली आभारी हूँ. ये करने से मेरे पति और मेरे सास वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो मेरे लिए अभी भी जीवित है. 3 Indian Army soldiers and a border security force troopers were killed while neutralizing 3 terrorists during a major gun battle near the LOC in Kupwara district as they foiled an infiltration bid from across the border in Jammu and Kashmir. से इस तरह की टनल जो हैं वो डिटेक्ट होती हैं. अभी आपको पता है कि सांबा हीरानगर सेक्टर में बड़ी टनल पकड़ी गई थी. काफ़ी लंबे अरसे से इस टनल का इस्तेमाल टेररिस्ट को इस तरफ भेजने के लिए किया जा रहा था. खासतौर पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा के जो टेररिस्ट हैं वो इन टनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे. मगर हमारी तरफ फोर्सेज जो हैं बराबर इन तरह की जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हैं उनके ऊपर नज़र रखती हैं. IB एंड LOC के ऊपर जो फायरिंग का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से उनके नापाक करारों की वजह से होता रहता है. नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वीकली ब्रीफिंग है उसके लिए हमारे साथ हैं हेल्थ सेक्रेटरी एंड DG ICMR. आई रिक्वेस्ट हेल्थ सेक्रेटरी टू स्टार्ट प्लीज. At the outset, our apologies for being a bit late. We had, all of us had some other important meetings. Coming to the COVID situation in the country, these are the major highlights. जो मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं. इस समय रिकवर्ड केसेस 79 लाख हो गए हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ी संख्या है. और अगर इसे औसत रूप में देखें तो पिछले सप्ताह प्रतिदिन रिकवर होने वाले मरीज़ों की संख्या 51,400 से अधिक थी. तो ये औसत संख्या है प्रतिदिन जो लोग रिकवर हुए. वैसे ही हमने लगभग अब 12 करोड़ टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, 11.96. और पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुए अगर उनका औसत देखें तो प्रतिदिन हमने 11,18,000 से ज़्यादा टेस्ट किए. तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है. और इसके बावजूद यानी 11,18,000 टेस्ट हर दिन करने के बावजूद जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी घट रहा है और अब वो घटकर 7.18% हो गया है. यदि हम 24 घंटे के पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले सप्ताह में
तो वो और भी नीचे हैं और 4.2% हैं। ये केसेस पर मिलियन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से एक हैं। पिछले 2 सप्ताहों में यदि आपने ध्यान से इन आंकड़ों को देखा हो तो आपने ये पाया होगा कि जो विश्व का औसत नंबर था केस पर मिलियन का, हम उससे कुछ अधिक नंबर दिखा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में जो हमारे यहाँ केसेस की संख्या में गिरावट आई है, उसकी वजह से केस पर मिलियन पॉपुलेशन अब 6,225 है हमारे देश में, जबकि विश्व का एवरेज जो है, विश्व का जो औसत है वो 6,400 केस प्रति मिलियन है। और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 30,000 तक भी है प्रति मिलियन। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 7 दिनों में देश भर में और विश्व में जो नए केस आ रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि पिछले हफ्ते में या पिछले सप्ताह में, पिछले 7 दिनों में विश्व में कहाँ कहाँ इन्फेक्शन किस गति से फैल रहा है। पहले वाली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली क्यूमुलेटिव रूप में जो केस प्रति मिलियन है वो बहुत कम है। लेकिन अगर पिछले सप्ताह का देखें तो विश्व का एवरेज था 482 नए केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन, भारत का एवरेज था 235, और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 5,000 से भी ज़्यादा था प्रति मिलियन। और ऐसे देश हैं जिनकी आबादी हमारी आबादी से बहुत कम है। ये मृत्यु के आंकड़े हैं, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन। भारत में ये 92 मृत्यु हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन की। विश्व का जो एवरेज है वो 160 डेथ है प्रति मिलियन। और बाकी देशों के भी हमने आंकड़े दिए हैं जहां 700, 750 से अधिक मृत्यु हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये क्यूमुलेटिव या हिस्टोरिकल आंकड़े हैं, पिछले सप्ताह क्या हुआ वो भी देखना महत्वपूर्ण है। अगर हम नई मृत्यु जो कोविड से हुई पिछले सप्ताह पूरे विश्व में उसको देखें तो विश्व का औसत 7 था, 7 न्यू डेथ्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश का औसत था 3 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन। और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 20, 30, 50 तक भी था। तो यानी विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां नई सर्ज देखी जा रही है नंबर्स में और मृत्यु में, जबकि भारत में अभी तक सबके सम्मिलित प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयास से, राज्य सरकार के प्रयास से, संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास से ये नंबर नियंत्रण में है। जो एक्टिव केसेस हैं देश में अब वो केवल 6% रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 92% से अधिक हो गया है। तो जो इस ग्राफ का हरा हिस्सा है, the part of the graph that is shown in green represents the recovered cases। हरा हिस्सा दिखाता है वो मामले जो रिकवर हो गए, अपने घरों में चले गए, अभी सकुशल हैं। और इस ग्राफ का जो नीला हिस्सा है वो दिखाता है जो केसेस अभी भी एक्टिव हैं, यानी या तो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में, मेडिकल केयर में हैं। तो जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5.83% हैं और यही हम कह रहे हैं कि 6% से कम हो गए हैं एक्टिव केसेस। अब पिछले 24 घंटे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिछले 24 घंटे में 6 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जहां की नए केसेस, देश भर में जो नए केस हुए उनका 54% वहां से रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ने 5,000 केस रिपोर्ट किए पिछले 24 घंटे में, 5,000 से कुछ ज़्यादा। पश्चिम बंगाल ने 3,900, केरला ने 3,500, महाराष्ट्र ने 3,200, हरियाणा ने 2,400 और तमिलनाडु ने 2,200। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए। और ये तस्वीर उन राज्यों की है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 62% मृत्यु, नई मृत्यु रिपोर्ट की कोविड से होने वाली।
महाराष्ट्र में 85, दिल्ली में 71, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं नए मृत्यु के। वेस्ट बंगाल ने 56, उत्तर प्रदेश ने 25, केरला ने 22 और पंजाब ने 20। तो 62% जो नई मृत्यु रिपोर्ट हुई पूरे देश भर में, वो इन 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में हुई। तो आगे जाते हुए हमारी प्रार्थना और हमारी अपेक्षा समुदाय से, राज्य सरकारों से और हम सब से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, क्या है? हमारी अपेक्षा और हमारी प्रार्थना है कि कृपया हमेशा हर समय फेस कवर और मास्क लगा कर रखें और ठीक ढंग से लगाएं। मास्क लगाने का मतलब है कि आपकी नाक, आपका मुंह कवर्ड हो उससे। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जिसको हम 2 गज की दूरी भी कहते हैं, और हाथों को निरंतर साबुन और पानी से धोएं। ये 3 चीज़ें हम बार बार दोहराते हैं, आज भी दोहरा रहे हैं। हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि अगर हम सब इन नियमों का पालन करेंगे तो हम आगे जाते हुए इस बीमारी पर जो नियंत्रण हमने पाया है और जो पकड़ पाई है उसको और बेहतर बना सकेंगे, नंबर्स और घटेंगे, मृत्यु भी घटेंगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Friends, we can take some questions. I think, sir, first we take online question. Is the government considering any tie-up with Pfizer for their COVID vaccine? And does India have the infrastructure for the specialized cold chain requirement for this vaccine? The National Expert Group on Vaccine Administration is in dialogue with all vaccine manufacturers, including domestic manufacturers as well as foreign manufacturers. When we continue this dialogue, we not only look at the status of development of their vaccines, we also look at the regulatory approvals, where have they progressed, and we also engage in a dialogue about the logistical requirements if such vaccines have to be stored at temperatures which may range from 2 to 8 to -50 to -70 to -90 degrees, as well as the doses that will be required to be administered. This is a continuously changing dynamic situation, and if and when regulatory approval comes, we would share it with you. 13. So since the flavor of the day is Bihar, I wanted to ask, Bihar has amazing COVID numbers. It has a less than 2% positivity. It has 0.5 CFR. And this despite the fact that there were so many violations that the Election Commission was forced to issue an advisory to political parties saying, please ensure that COVID appropriate behavior happens. What is the secret of Bihar's numbers, sir, COVID numbers? How did Bihar control COVID? Bihar has so far done 1,15,21,841 tests, to be exactly precise, out of which 12,93,900 odd are RT-PCR tests, which means that whatever total number of tests Bihar has done, roughly 12% are RT-PCR and remaining are rapid antigen tests. So you can always argue that a large number of tests are rapid antigen tests, but Bihar has also been advised by us that whenever they conduct the rapid antigen tests, those who are symptomatic negatives must mandatorily be subjected to RT-PCR. This is the advice that we give to all states and to all UTs, because we would not want any undetected person to move around in the society and spread infection. We had also deputed during the election campaigning period a central team to Bihar,
which had found certain good practices, which had also found certain areas of concern. Particularly, that team found that outside urban centers, the wearing of mask, maintenance of physical distance, and hand hygiene were less than satisfactory. So those findings we have shared with the state government, as we do in respect of other states. And we are happy to report that once we submitted those findings for the consideration of states, requisite corrective action was initiated by Bihar. Sir, another online question. What is the ratio of RT-PCR and rapid antigen tests in total daily tests? How has the ratio changed over the last 2 months? Hasn't this been asked many times, but we will still answer. You see, if we look at today morning's figure, because again this is dynamic, this keeps on changing. As of today morning, in the country as a whole, 46% was the RT-PCR tests, 49% were rapid antigen tests, 5% were tests carried out using TrueNat and CBNat. We track this for each state, for each UT and nationally. Number 15. सर, जैसा भी आपने बताया भी कि आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस, लेकिन तुलना करें तो दिल्ली में पिछले कुछ समय में लगातार केसेस बढ़े हैं। और आपकी स्टडी के मुताबिक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी तेजी से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसके लिए? जो फैक्टर्स हैं वो तो आपको मालूम है, बताया भी जा चुका है कि एक तो एयर पोल्यूशन, एक कोल्ड वेदर, एक फेस्टिवल्स, एक शादी का सीज़न, तो इन सब की वजह से लोग ज़्यादा एकत्रित हो रहे हैं एक जगह पे। थोड़ा सा मास्क के आप लोग की वजह से काफ़ी लोग मास्क पहन रहे हैं, और उसको आप लोग और बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 गज की दूरी मार्केट्स में नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और है। और कुछ लोग दिल्ली NCR रीजन से भी आवागमन भी ज़्यादा चल रहा है, तो इस क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से, इसलिए ये भी रीज़न हो सकता है जिससे कि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में। मगर जैसे कि बताया है कि दिल्ली में एक स्पाइक हुई थी जून के महीने में, और जल्दी कम आई थी और काफ़ी नीचे तक आ गई थी। फिर सेकंड स्पाइक जो हुई है वो सितंबर में हुई, वो बिल्कुल नीचे तक वापस नहीं आई। ये थर्ड स्पाइक तो डेफिनेटली है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा केस आए। Sir, another online question. Since the government is planning an early 2021 rollout, would the vaccines only be available in metro cities in India initially? If so, what are the challenges in the transporting them to reach second or third tier towns in the country? You see, Government of India does not make any discrimination between metro and non-metro. Whenever regulatory approvals for vaccines are provided, we have a plan which would ensure that vaccines would be available to all priority population groups, irrespective of the region where they reside. Number 18. Hello, sir. With regards to vaccines only, what is the situation with regards to deep freezers which can store vaccines at -70, -80 degrees Celsius? How many freezers do we have? And are we going to increase are we procuring more such freezers? We are in a position to not only augment and strengthen, but also add to our existing cold chain capabilities. We would separately share those procurement figures with you. They are not readily available with us at the present moment in time. But yes, the point is that any such large scale immunization, vaccination, whenever it happens, would not only require a substantial increase in the number of cold chain points, but also a substantial increase in the number of cold chain equipment, including walk-in coolers, deep freezers, and reefer vans. 26.
सर मेरा सवाल भी दिल्ली को लेकर है। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अभी 7-8 हज़ार पर डे आने लगे हैं इसके आसपास, तो अभी भी आपने देखा होगा लगातार खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में कई जगह ना आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। तो जब ये केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, 15,000 तक जैसा अनुमान लगाया गया था वहाँ तक जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम है? केंद्र सरकार क्या देख रही है या दिल्ली में और इंतजाम बढ़ाने के लिए? पिछले सप्ताह मेरे स्तर पर दिल्ली की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, उनसे एक समीक्षा की गई थी। उसके बाद जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, गृह मंत्रालय के सचिव हैं, उनके स्तर पर भी एक समीक्षा की बैठक हुई थी। और पिछले ही सप्ताह जो भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी और उनकी टीम के साथ बैठक की थी, जिसमें हम सब उपस्थित थे। इन बैठकों में हमने दिल्ली के प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि यह आवश्यक है कि न केवल टेस्टिंग अधिक संख्या में की जाए, बल्कि टेस्टिंग टारगेटेड हो। जब हम टारगेटेड टेस्टिंग का उल्लेख करते हैं तो हमारा मानना ये है कि ऐसे स्थान जो कि इन्फेक्शन को फैलाने की संभावना या पोटेंशियलिटी रखते हैं, जैसे बाज़ार, जैसे वर्क प्लेसेस, फैक्ट्रीज़, ऐसे स्थान जहां धार्मिक जमाव होता हो लोगों का, उन सब में टेस्टिंग की जाए। और दिल्ली सरकार ने वैसी टेस्टिंग प्रारंभ की है। दिल्ली में आपका कहना ठीक है कि पिछले एक सप्ताह अनेक दिन ऐसे थे जब 7,000 से अधिक केस आए, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,000 से कुछ अधिक केस आए हैं, नए केस। तो कुछ तो गिरावट है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेंड लंबे समय तक रहता है कि नहीं रहता। आपने 15,000 केस आने की संभावना का भी उल्लेख किया। ये एक संभावना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है कि किसी ने कह दिया तो 15,000 केस आएंगे ही। वो तो संभावना इसलिए बनाई जाती है कि हम किसी भी प्रशासन को ये कह सकें कि जो वर्तमान ट्रेंड है केसेस के बढ़ने का, अगर ये अनवरत बिना रुके जारी रहेगा तो इतने केसेस हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप इतनी संख्या में बेड्स की तैयारी करें, इतनी संख्या में ऑक्सीजन की तैयारी करें, इतनी संख्या में अन्य जो उपस्कर हैं या इक्विपमेंट हैं वो तैयार रखें, ताकि प्रोएक्टिव रूप में, ग्रेडेड रूप में, प्रीएम्प्टिव रूप में आप कार्रवाई कर सकें। 31. We claim that we have one of the lowest rates per million cases in India, but then we also test much less than many other countries. In a sense, like we are on 100th on the list of per million tests. So how do you justify that? Okay, we do not claim that we have the lowest. In fact, we do have the lowest. Those are the facts. If you do not believe us, please look at the global websites. So which are the global websites that track COVID? The first global website that tracks COVID numbers is Our World in Data. Please have a look at that. The second global website that looks at COVID numbers is Worldometer. Please have a look at that data. Those websites are not controlled by the union government or by any other agency of the union government. These are global websites. They track global numbers and different countries. So my first submission is that it is not our claim versus some other country's claim. These are numbers which are in the public domain, and these are transparent numbers. So that is the first thing. The second thing is testing. I just told you that if we look at absolute numbers, historical numbers, we have tested 11 crore plus samples, which is second highest tests in the world. If we look at daily numbers, average daily numbers, then we test 11 lakh more than 11 lakh per day. In fact, I had a slide which I omitted to show you, but next time I promise, even if you are not here that day, we will show that slide to you, which tracks average daily tests done by India and done by at least 6 top countries of the world, which will show you
that if we take last 2 weeks figures into account, I'm not talking of historical figures, because week on week we are increasing. If we take last 2 weeks figures, we are testing more than any other country in the world, more than any other country. Average per day tests. You see, you can always quibble. Let me explain this in Hindi. जैसा जीवन में होता है, वैसा ही इन्फेक्शन से लड़ाई में भी होता है. एक नज़रिया है कि आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, आप मीन मेक निकाल सकते हैं. दूसरा नज़रिया है कि आप देख सकते हैं कि ये काम अच्छा हुआ और आप उसकी बढ़ाई कर सकते हैं और अन्य लोगों को कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही अच्छा काम करें. तो ये निर्णय हमको करना है कि क्या हम नुक्ताचीनी का रवैया अपनाएंगे, क्या हम मीन मेक करने का रवैया अपनाएंगे, क्या हम केवल खोट ढूंढने का रवैया अपनाएंगे, कि क्या हम अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, उनको बड़े पैमाने पे करने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भी हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे. तो हम दूसरे रवैये का पालन करते हैं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर राज्यों में अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, किसी संघ शासित क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और लोग भी वैसा करें. जहाँ कहीं कमी रह गई हमारे प्रयासों में उसको हम इम्प्रूव करें, उसे बेहतर बनाएं. ये हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए. 37. So my question is regarding both Pfizer and Moderna, given the fact that Moderna requires -25, Pfizer's vaccine requires -70. If you could just tell us what the conversation with Pfizer particularly has been, given the fact that they've made a claim of 90% efficacy. I also have a second question on Bihar. Is it estimated that in days to come, because of the political rallies, would you see a further increase in cases? Are you expecting a spurt in Bihar? You see, in respect of both your questions, I would not be in a position to give you very specific answers. The first question of what are the specifics of our conversation with a vaccine manufacturer is not something that we would be revealing at such a forum. However, when it reaches any kind of finality, we would be in a position to share that information with you. As far as Bihar is concerned, I have just told you, other colleague of yours, that we had sent a central team, because we are also concerned not only about Bihar but about other states also where by-elections were announced and where there were reports that social distancing is not being followed, mask is not being worn. So central teams had gone to all these states and their reports we had received and we had shared with the state. And we had drawn the attention of the state to certain points that these central teams had made. And those points where a follow-up action, time-bound follow-up action was required by the state. And as I also said that the cause for satisfaction for us is that when we drew the attention of the state to those points which were made in the report of the central team, the states did initiate action to rectify whatever were the defects. However, these are things which are long term. So what has happened in Bihar last week or maybe 10 days ago would take time to manifest itself, either in terms of new numbers or in terms of any other development. So this is something which requires close watch. And within the ministry, we do keep a close watch. There is a particular division headed by our colleague, Joint Secretary Love Agarwal, who's sitting here, which does it on a 24-hourly basis. Love, would you want to supplement this? Sir, we monitor all the numbers, and as and when there is any action to be initiated at any point of time, we generally react to that. We coordinate with state also, sir. Last question, 152. सर, क्या दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में आ गई है और क्या इस फेस्टिवल सीजन में केसेस और बढ़ेंगे? क्या इसकी संभावना है? देखिए, फेस्टिवल के बारे में तो डीजी आईसीएमआर ने भी आपको बताया कि जब भी कोई इस प्रकार का अवसर होता है, जब लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, चाहे वो त्यौहार का अवसर हो
या कोई समारोह हो, जैसे इन्होंने शादी का उदाहरण दिया, इस मौसम में शादियों के भी मुहूर्त होते हैं, या अन्य कोई आयोजन हो और भीड़ भाड़ में लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, फिज़िकल दूरी नहीं मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इस बात की संभावना तो रहती है कि इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए ये तो हम लगातार लोगों को बताते हैं। जहाँ तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का प्रश्न है, मुझे ये लगता है कि कई बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर जो विमर्श होता है वो सूचना पर कम आधारित होता है और अन्य बातों पर अधिक आधारित होता है। तो हमें इस तरह के डिस्कशन एविडेंस पर और साइंस पर आधारित करने चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको मैं अंग्रेज़ी में भी समझा देता हूँ। You see, the discussion on community transmission is quite often informed by less than adequate information and less than adequate facts. So our request to all of you is that whenever we do this kind of a discussion, it should be based on science, it should be based on facts. Thank you very much, sir. Thank you, friends. For more updates, do like, share and subscribe News World and give